चलो थैंक यू. हां नो हा फॅन आहेच ना, याची हवा लागेल. हां हां काय ओके, हा घेऊन जा बिंदास. ए सी बंद आहे का रे? दोन्ही पण? अच्छा. Good evening. We are starting the lecture. Okay, only 7 people are online. Let it be, no issue. 7 means 6 of you. Okay, so Yuga Devi, Gajanan Salvi, Yogesh Ghusare, then Swapnali Khedekar, Chaitrali Shevkari, Hanuman Thorat. No issue, no issue. Okay, so we are starting with a new chapter, that is the capital gain. Okay, so page number, what is the page number in your book? Capital gain. Got it. So this page number is 285, right? Chalo. Okay, so profits or gains arising on transfer of capital asset shall be chargeable under the head capital gains. Okay, so there must be a capital assets. Okay, then the assessee transfers such a capital asset, that is the second condition. Tax points are there must be a capital asset, the assessee transfers such a capital asset, and there must be a profit or gain including negative profit or gain on such a transfer. Okay, so we call it as a capital gain if profit incurs, we call it as a profit or capital loss in case of loss will be there. Okay, so basis of charge, capital gain shall be taxable in the previous year in which the asset is transferred. Okay, so we make a payment in assessment year, okay, for the previous year. So transfer should happen in previous year. However, in some cases capital gain is taxable in the previous year in which consideration is received rather than the previous year in which transfer took place. Okay, ऐसा भी होता है. Okay, because you might have sold it in March, but you received the proceeds of that. Okay,
in April, okay, April 2026. So you have to pay the capital gain, okay, in year 27-28, correct? 27-28. So that is the thing. Okay. So transfer, here they are not using a word like sale of capital asset. Okay, they are saying transfer. Okay, तो जैसा बैंक ने अगर कोलैटरल सिक्योरिटी करके लिया हुआ है that capital asset and that your account has become a NPA, non-performing assets. So in that case, bank takes a possession on that. Okay, and bank has a rights under SARFAESI Act to sell it. Okay, so they can sell it. Okay, and still you have to pay the capital gain in that case. Is that clear to you? Okay. So compulsory acquisition by the government, that is also included in the transfer. Okay. Capital assets. So capital asset means there are two type of assets, tangible, intangible. You know the difference. Okay. So capital gain arises on both type of assets. Okay. अगर कैपिटल गेन ऑन गुडविल आप सेल करते हो, इन केस ऑफ एक्विजिशंस और मर्जर, गुडविल इज ट्रांसफर्ड. ओके, इन केस ऑफ डीमर्जर, गुडविल गेट्स ट्रांसफर्ड. ओके, इन केस ऑफ एक्विजिशन, गुडविल गेट ट्रांसफर्ड. ओके, तो इन दैट केस ऑल्सो कैपिटल गेन विल अराइज. क्लियर? So any kind of property held by an SSE, whether or not in connection with his business or profession, okay, but you know that goodwill, that is in relation to the business or profession. Okay, so that's why goodwill का जो भी transfer आएगा, where you will report it, under this capital gain, number 4 capital gain, or number 3 profits or gains in the business or profession. So where you will report? Goodwill of the organizations in case of acquisition. So where you will report that? कैपिटल गेन. कैपिटल गेन कहाँ रिपोर्ट करोगे? कैपिटल गेन के लिए हमारा ये अलग चैप्टर है. ओके, बट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड ओवर हियर. ओके, वो कहाँ जाएगा? दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन बैलेंस शीट, P&L बेसिकली. दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन P&L. ओके, उसका जो भी एंट्रीज है, ओके, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, and that will be reported in profits or gains of business or profession. Clear? That is the difference. Okay. So any securities held by foreign institution investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities of Exchange, SEBI. Okay. Then investment fund like share trading. तो share trading में का जो profit होता है, so we have to pay the capital gain on that. Okay, so there are two types of capital gain. एक है short term capital gain and long term capital gain. Clear? Okay, so whenever you held that property for 3 years, correct, and you sell it after 3 years, you sell it, so it results into a long term capital gain. अगर 1 साल में, 2 साल में, and within 3 years you sell the property, so that is a short term capital gain. Only in case of shares this definition varies. Okay, तो shares के लिए definition क्या है? You should hold those share for 12 months, that is the 1 year. Okay, तभी short term होगा. Okay, 12 months के अबो जब जाता है तब there will be the long term capital gain. Clear? Okay, चलो. And it is applicable to everything like shares, debentures, okay, mutual funds, equity linked, of course, equity linked mutual fund. Clear? Okay. Debt mutual fund के लिए there is no capital gain. Okay, because in case of mutual fund also there are types. कौन कौन से types हैं? There, 1 minute, हाँ, there will be equity mutual funds, there will be a debt mutual funds, and there will be a hybrid mutual funds, and there will be other mutual funds. Okay, other asset mutual funds. Okay,
सो इक्विटी क्या करता है, इक्विटी में 90% अमाउंट इज allocated on a equity shares. Clear? So there are also types like large cap, mid cap, small cap. Okay, so that is equity. Okay, और debt क्या करता है, they allocate the pool of amount in debt fund only. You understand debt? जैसा आप FD रखते हो, FD is what type? Debt type. So you get a fixed interest on that. So that is the debt type. Okay. So बैंक में जाके FD रखोगे तो मिलेगा कितना, 6%, 5%, 6%, 5.5%. Okay. But if you invest in company's debt fund, company's debt funds, so you will get a 9%, 9.5%. So mutual fund is the pool of investment, pool of investment. कंपनी में किस में इन्वेस्ट किया आपने, इक्विटी में, यानी शेयर मार्केट में, जो सेबी कंट्रोल कर, डेट फंड, यस, हाँ, यू आर इन्वेस्टिंग इन डेट फंड. ओके, इक्विटी भूल जाओ, नॉट इन इक्विटी. हाँ 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 हाँ. See, company is not allowed to invest in equity. You are fund in equity. Okay, what they do generally for bank project purpose. Okay, they require a revenue. They require a funding. They require funding. So instead of taking it from banks, क्योंकि बैंक का रेट कितना है? No, not 6%. That is a housing. That is a different thing. Okay. बैंक के लिए जब लगता है बिजनेस लोन्स, सो बिजनेस लोन्स यू गेट एट अ 10% to 11%. Okay, 11%, 10%, that is the rate. Okay, so that time what they do, they floated debenture schemes, debt funds. Okay, so people like us, they invest in it. Okay, तो उनको तो अच्छा होगा ना, बैंक को उतना देने से अच्छा अगर 1% भी बचता है, 0.5% सेविंग होता है ऑन करोड्स ऑफ रुपीज, सो इट इज गुड फॉर देम. बट दे आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट. जैसा बैंक का कमिटमेंट है, बैंक कभी ऐसा करता है क्या कि उसका बिजनेस कम ज़्यादा हो रहा है, ओके, सो वो बोलता है कि 5.5, सॉरी यार इस साल बहुत कम हो गया, तो यू टेक इट 4%, ऐसा होता है? नो. सो सेम अप्लाइज ओवर देयर. कंपनी का अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी रहने दो, इफ इट इज कमिटेड, सो दे हैव टू पे. करेक्ट? ओके, चलो आगे. सो कैपिटल एसेट में बी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, corporeal like furniture, jewelry, etc., or intangible. Incorporeal, that is a goodwill, tenancy rights, copyrights, etc. But this intangible or incorporeal means not of corporate. जैसा organizations है, companies है, private limited है, okay. लेकिन अगर कोई proprietor है, okay, तो proprietor का जो goodwill है, उसका कंपनी है ना, फर्म है उसकी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसमें भी गुडविल आएगा ही. तो वो गुडविल अगर सेल होता है तो दैट विल बी रिपोर्टेड ओवर हियर. क्लियर? दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरियल. ओके. सो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी, इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और ऑफ एनी राइट्स व्हाटसोएवर, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड. कंपनी के पास क्या होता है? इन्वेंट्री. ओके. इन केस ऑफ एक्विजिशन और डीमर्जर, ओके, इन्वेंट्री का जो भी ये है, ओके, उस पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा. इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आल्सो, कंपनी, इफ दैट प्रोप्राइटरशिप कंपनी इज हैविंग अ इन्वेंट्री, ओके, और इन्वेंट्री सेल होता है, तो उस पे कैपिटल गेन आने वाला नहीं है, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड. क्यों लाया है वो? Because of certain production, right? So capital gain normally it will arise
on the items you found on बैलेंस शीट. क्लियर? क्योंकि गुडविल भी कहाँ आता है? बैलेंस शीट में. So all your tangible, intangible things, okay? So it is not applicable to stock in trade, okay? Then personal effect. Personal effect means any movable property held for personal use of the assessee for any dependent member of his family, but excludes the following, okay? So it is not on personal effect also. Okay. So उसमें कौन कौन है? ज्वेलरी, देन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट. ओके. सो immovable property and aforesaid assets held for personal use are not personal effect and hence are capital asset, like house property. अरे यार, हाँ चैत्राली, हेलो हेलो. सर वॉइस नहीं आ रहा ऑनलाइन. वॉइस नहीं आ रहा है. 1 मिनट. हाँ, I'll do it. 1 मिनट. इनको वॉइस ही नहीं आ रहा है अपना. हम तो इतना हेलो, अभी आ रहा है क्या वॉइस? ओके, सॉरी. आप पहले ही बताना चाहते यार. कहीं चैट बॉक्स में वगैरह लिखा कि नहीं आपने वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं लिखा है. ओके, वेरी गुड. Okay, then personal effects, it includes wearing apparels, furnitures, car, cycle, scooter used by the assessee for personal purpose. उस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा. लेकिन घर है, ओके, प्लॉट है, उस पे सारे पे कैपिटल गेन आएगा. ओके, हाउस प्रॉपर्टी. ओके, एंड ए हाउस प्रॉपर्टी इवन दो यूज फॉर पर्सनल पर्पज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल इफेक्ट. ओके, तो उस पे कैपिटल गेन आना ही आना है. Intangible asset does not have personal effect. Okay, intangible assets does not have personal effect. Security is also not personal effect. तो इन सारों पे कैपिटल गेन आएगा. ज्वेलरी, what it includes ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metals. Okay, then precious or semi precious stones, whether or not set in any furniture, utensils or other articles. Okay. ओके, लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या करोगे आप? जिस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा, दैट इज द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया. ओके, शेत जमीन. ओके, सो एग्रीकल्चर लैंड, इफ यू विल सेल, बीइंग अ फार्मर, इफ यू विल सेल दैट एग्रीकल्चर लैंड, देयर इज नो कैपिटल गेन, बट इट शुड बी इन रूरल एरिया. ओके, इफ इट इज इन मोशी, if it is in Charoli, then capital gain will arise. Though it is agriculture land, but still capital gain will arise. तो उसका एक रूल है. ओके, क्या रूल है? कि कोई भी जमीन अगर that municipal corporation is there, municipal corporation or municipality, and population of that town, okay, so that town is of 1 lakh, more than 10,000 but not exceeding 1 lakh. Okay, so Charoli, you know Charoli, where it is? कहाँ पे? हाँ, आळंदी. Okay, but it lies just 2 kilometers, okay, away from आळंदी. ठीक है. एंड आळंदी में आज तक अभी आई थिंक इट इज इंक्लूडेड इन पुणे महानगर पालिका आळंदी, बट नहीं तो अभी भी वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी है, म्यूनसिपाल्टी. ओके, सो एक केस मेरे पास आया था. चरोली का एक फार्मर था. ओके, और उसने उसका एग्रीकल्चर लैंड बेचा था. ओके, तो उसको क्या उसने ज़िंदगी में, उसको पता भी नहीं था ये सारी चीज़. उसने ज़िंदगी में कभी ये भरा नहीं था इनकम टैक्स. ओके, बट
because of AI installed at income tax department, that was noticed, that got noticed. Okay, and they know Charoli, that is just 2 kilometers away from आनंदी. ओके, तो उसको नोटिस भेजा गया, उसको कुछ भी समझना है, उसको पढ़ भी नहीं सकते. ओके, दैट नोटिस कम्स इन इंग्लिश और हिंदी. ओके, सो समहाउ ही गॉट माय नंबर एंड ही केम टू मी. ओके, कि ऐसा ऐसा नोटिस आया. सबसे पहले तो मुझे उसका पैन रजिस्टर करना पड़ा, सबसे पहले पैन निकालना पड़ा, उसके बाद पैन भी नहीं था. बिकॉज ऑफ नाउ दे व्हाट दे हैव डन, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस, दे आर नेटवर्क थ्रू नेटवर्किंग, रजिस्टर्ड ऑफिस के नेटवर्किंग से क्या उधर डॉक्यूमेंट्स बने हैं. ओके, एंड दैट कम्स इन योर एआई स्टेटमेंट. सो अभी उसके पास पैन नहीं है, बट ही हैड अ आधार, क्योंकि आधार तो सब इधर लगता है. ओके, सो ही हैड दैट आधार, तो आधार नंबर पे उसको पकड़ा गया. आधार में क्या होता है, एड्रेस इज ऑल्सो देयर. पैन में पहले पैन, यू अंडरस्टैंड, पैन में कोई एड्रेस नहीं होता है आपका. ओके, योर डिटेल्स आर देयर बट एड्रेस है, कार्ड के ऊपर नहीं होता, उनके पास होगा, लेकिन ढूंढना अगर है एड्रेस पे तो पैन इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट. अगर उनको ढूंढना भी है तुम्हारा एड्रेस से पैन, क्योंकि पैन कब निकालते हो आप, जनरली एट यंग एज, आफ्टर 18. ओके, पैन निकाल लेते हो, उसके बाद आपका बहुत सारा इधर से उधर, उधर से इधर चल, लाइफ में घूमते रहते हो. ओके, और वो जब भी बेचते हैं तभी पैन नहीं, तभी आधार कार्ड लगता है. पैन भी लगता है हमारे लिए, लेकिन कहाँ पे लगता है, ये सारे रजिस्टर्ड ऑफिस में. अगर एग्रीकल्चर लैंड मेरे को बेचना है तो आई विल जस्ट रिक्वायर आधार. एग्रीकल्चर लैंड मुझे बेचना है तो आई विल रिक्वायर आधार. हम जैसे घर खरीद रहे हैं या कुछ, ये हम लगाते हैं, लेकिन विदाउट पैन ऑल्सो चल जाता है काम, आधार अगर नंबर है आपके पास. क्लियर? एंड दैट्स वाई आधार पैन लिंकेज आपने सुना होगा ना, दैट केम. ओके, और अभी भी अगर आधार पैन लिंकेज नहीं है तो देर इज अ फाइन ऑफ 10,000. उन्होंने एक डेट रखा था, 3-4 साल ये ड्राइव चलते गए. ओके, सो नाउ फॉर ITR it has become a compulsory, you should have a Aadhaar linked to the PAN. Clear? Okay. So agriculture land in India is not a capital asset except the following. किसके लिए? Land which is situated within the jurisdiction of the municipality, whether known as municipality, municipal corporation, notified area committee, town area committee, town committee or cantonment board having population of 10,000 or more. ठीक है? So more than 10,000 but not exceeding 1 lakh up to 2 kilometers. So वो जो एरिया है उसमें आप ये हो जाए, more than 1 lakh but not exceeding 10 lakh, so up to 6 kilometer. So आलंदी से लेके 6 किलोमीटर तक, because population has grown. अभी आनंदी का कितना होगा, ज़्यादा ही होगा 1 लाख से. Then more than 10 lakh, so up to 8 kilometers. So this is the rule. Clear? Okay. But beyond 8 kilometer it is all agriculture land. अभी मेरे गांव की बात करते हैं, मेरा गांव है धामणगांव रेलवे. So that town is having a population but not exceeding 1 lakh. ओके, तो वहां से 2 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी आएगा, सो दैट ओन बी एग्रीकल्चर लैंड. देयर विल बी ए कैपिटल गेन इफ दैट एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड विद इन द रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर. बट माई टाउन, माई विलेज, दैट इज अ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम धामणगांव रेलवे. ओके, सो आई हैव नो वरी, क्योंकि जब भी पॉपुलेशन अगर बढ़ता है धामणगांव रेलवे का, स्टिल आई हैव नो वरी बिकॉज इट इज मोर देन 8 किलोमीटर. Clear? Okay.
Then gold bonds, following gold bonds issued by the central government are not capital assets. Okay, because they falls under the that thing like shares, debentures, mutual funds and bonds. Okay, but issued by central government are not capital assets, okay. So which are those? 6.5% gold bond which is issued in 1977, 7% gold bonds issued in 1980, and national defense gold bond, that is 1980s. Okay, then special bearer bond 1991 issued by central government, these are not capital asset. Gold deposit bonds, okay, so that is issued in 1999, gold deposit scheme, they are not a capital asset. Then there are two types of capital asset. One is short term capital asset and one is long term capital asset. Okay, short term capital asset it means a capital asset held by SSC for not more than 24 months immediately preceding the date of its transfer. Okay, I said 3 years, it is 2 years. Okay, 2 years. So I made a mistake over here. Okay, and long term capital asset, it means a capital asset which is not a short term capital asset. Simple definition for long term, which is not short term is a long term. Clear? Okay, but there are exceptions for shares. Okay, so shares, then a unit of an equity oriented fund, that is the mutual funds. Okay, equity oriented, zero coupon bonds, then units of UTI whether quoted or not, units of listed debt oriented mutual fund, some are listed debt oriented mutual fund and they are also comes under this. Okay, okay. So short term capital gain we call it a CG, and long term capital gain LTCG. Okay. So in case of shares, period of holding, while computing the period of holding of any capital asset, following points are to be considered. Okay, so shares held in company in liquidation, the period after the date of commencement of liquidation is to be excluded. Date of transfer, for calculating the period of holding of capital asset, the date on which the asset is transferred is to be excluded. Okay, then preference shares, conversion of preference shares into equity shares, period of holding includes the period for which the preference shares were held by the assessee. Okay, आप अगर म्यूचुअल फंड, ओके, यू अंडरस्टैंड, थैंक यू, पानी पण द्याला काका. हम क्या करते हैं बहुत बार कि देर इज अ थिंग कॉल्ड SWP, वन थिंग इज कॉल्ड SIP. व्हाट इज SIP? Very good, systematic investment plan. Okay, so we start investing. Okay, it starts with a 500 rupees. Okay, तो 500 रुपया हम इन्वेस्ट करते रहते हैं हर महीना. Okay, then whenever you will redeem it, redemption, you understand redemption, आपको अगर पैसे का जरूरत है, that time you redeemed it, so that time capital gain will arise. ओके, जब आप परचेस कर रहे हो तभी कुछ नहीं. ओके, आप अगर हियर दे हैड यूज्ड द वर्ड ट्रांसफर, नॉट अ सेल, है ना. सो रिडेम्पशन इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर. ओके, अभी आप क्या कर रहे हो, आपने वो सेल कर दिए यानी रिडेम कर दिए. ओके, स्टिल इट इज अ ट्रांसफर एंड दैट टाइम कैपिटल गेन विल अराइज. राम सुन, मैं ना सिखा रहा हूँ तो मैं आपसे ना 10 मिनट के बाद बात करता हूँ. अरे कोई नहीं है, ठीक है, पिताजी है. हाँ, देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट SWP. हैव यू हर्ड दिस वर्ड SWP? व्हाट इज दैट? विड्रॉल प्लान. विड्रॉल प्लान में क्या कर रहे हैं आप? इट इज एज गुड एज रिडेम्पशन, निकाल रहे हो उसको, तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा. क्लियर? तीसरी केस है STT. व्हाट इज दैट? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान. तो आप एक स्कीम से उठा के पैसा दूसरे स्कीम में डाल रहे हैं. यू आर नॉट रिडीमिंग. आप रिडीम कर रहेगा नहीं, आप एक
स्कीम से पैसा उठा के दूसरे स्कीम में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड का स्कीम है तो उसमें कैपिटल गेन लगेगा क्या, वाई, हाँ तो लगना चाहिए, तो लगेगा ही, 100% लगेगा. Okay, so except SIP, all schemes like SWP, okay, STP, सारों पे गेन लगने जाएगा. ठीक है, ओके. देन कन्वर्जन, प्रेफरेंस शेयर को बना रहे हो आप इक्विटी शेयर, कैपिटल गेन लगना ही है. ठीक है, बिकॉज दैट इज अ ट्रांसफर, दैट इज अ ट्रांसफर. We'll give you a break. Okay, 7:20 हो गया ना, so we'll give you 10 minutes break. Okay, and we'll start again. Okay, 7:30 को we'll start again.
So we are starting it again. Capital gain. परत जात आहे ते. जसं मोबाईलमध्ये ओपन राहतं आपला ॲप तसं नाही आहे का याच्यात? मोबाईलमध्ये जसं आपलं ॲप आपण लगेच काढू शकतो ना. हो, चालू आहे कुठे? अरे यार गडबड आहे. पेज नंबर ना 300 300. थांब एक मिनिट. हे काय 3595 3595 आहेच ना पेजेस आपल्या याच्यात 100. मग तो त्याला सर्च करत बसायला वाटतं. PDF ला नसेल करत आहे ते ना. असं स्क्रोल करता करता बंद होऊन जातं. किंवा इथं तरी एक पाहिजे होतं असं खाली यायला. माझं तेच झालं होतं. मग परत खाली आलं तेव्हा बंद झालं ते. नाही 300ला चालला जा. नाही नाही हेच आहे का? हां नाही थोडा वरती आता. किती आहे? 10 पान अजून वर. आला. नाही ठीक आहे आता आला. Okay, so I was telling you about there is exception for shares only. Okay, shares or units of UTI वगैरे unlisted shares. Okay, so here jewelry. Okay, period of holding from 1/7/20 to 7/3/26. Okay, so it is always more than 24 months, 2 years. Okay, more than 20. So it will be a long term capital gain. But in case of let's say these shares, listed share 7/7/23 to 15/4/25. किती महिने झाले? बट ऑफकोर्स इट इज मोर दॅन 12 months. 12 months मोर 12 months आहे म्हणून काय होईल? LTCA. ओके, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. ओके, दिस केस अनलिस्टेड शेअर्स. ओके, सो दिस इज purchased on 7/10/23. ओके, and it was held up to 15/9/25. 15/9/25. So it is less than, more than 12 months आहे. ओके, तर काय व्हायला पाहिजे होता? मोर दॅन 12 months म्हणजे LTCA व्हायला पाहिजे होता.
Okay, but this is the case of unlisted shares. So this is not applicable to the unlisted shares. This is applicable to the listed shares where SEBI is controlling. SEBI कुठे control करते? BSE, NSE. Okay, so that is a listed shares. That is a listed shares. Okay, the shares traded on BSE, NSE or any काय म्हणणार आपण त्याला exchange, our Indian exchange. Okay, so that is a listed one. Okay, पण unlisted shares असतील जसं प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे. Okay, so it will possess the same property as like others. Okay, जसं लँड आहे, प्लॉट आहे, ओके, घर आहे, हाऊस प्रॉपर्टी, सो सेम त्याला पण अप्लिकेबल होईल. कशाला? अनलिस्टेड शेअर्सला. ओके, सो दिस इज दॅट लेस दॅन 24 months, so that's why it is STCA. Clear? Clear? Same case, units of UTI, okay, from 15/5/25 to 1/1/26. So this is less than 12 months, so that's why STCA. ठीक है? Clear? Listed shares, units of UTI, so they will have a short term gain if it is held less than 12 months. 12 months. ठीक है? Then transfer, I said transfer, so transfers in relation to capital asset includes sale, exchange, relinquishment, okay, then extinguishment of any rights in the assets. Extinguishment, okay, you understand extinguishment? समजा मी माझं घर आहे ते माझ्या बहिणीला देऊन टाकलं. ओके, सो दॅट इज द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ माय राइट्स. ठीक है? And that will also be considered as a transfer, and then I have to pay the capital gain on that property. Is that clear to you? Okay. Then compulsory acquisition of an asset under any law, conversion of asset into stock in trade by the owner, that is also the transfer, and capital gain will incur on that. Okay, I'll take a case. Okay, समजा मी काही कॅप्टिव्ह बनवतोय, काही कॅप्टिव्ह लागणारे स्पेअर्स बनवते. ओके, सो दॅट इज द कन्वर्जन ऑफ. आणि कशापासून बनवतोय मी? तर माझं काही माझं प्लांट अँड मशिनरीमध्ये काही लोखंड आहे. ओके, तर ते लोखंड वापरून मी स्पेअर्स बनवतोय. सो दॅट केस विल ऑल्सो बी कन्सिडर्ड ॲज अ ट्रान्सफर ऑफ कॅपिटल ॲसेट इन टू स्टॉक अँड ट्रेड. ओके, अँड कॅपिटल गेन विल अराइज ऑन दॅट. क्लिअर? Then any transaction of immovable property like house property under section 53 of the Transfer of Property Act, any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, maturity or redemption of a zero coupon bond. Okay, exchange also includes barter. ठीक आहे? समजा आम्ही दोघांनी त्याचा मोबाईल आणि माझा मोबाईल, ओके, एक्सचेंज केला. ओके, तर कॅपिटल गेन विल अराइज. कॅपिटल गेन विल अराइज ऑन बोथ द पार्टी. ओके, सो कॅपिटल गेन फॉर मी ऑल्सो. वाय? बिकॉज आय ट्रान्सफर माय मोबाईल टू हिम. ओके, अँड ही ट्रान्सफर्ड हिज मोबाईल टू मी. ओके, त्याचं व्हॅल्युएशन निघेल आणि त्याप्रमाणे कॅपिटल गेन काढलं. आता तुम्ही म्हणाल कॅपिटल गेन कसं, व्हॅल्युएशन कसं काढायचं? ओके, का? कारण आपण काय करतो, याच्यातून कॉस्ट ऑफ परचेस ती मायनस करतो. म्हणजे काय करतो, आपल्याला गेन काढायचं आहे. ओके, सो गेन इज इक्वल टू व्हॉट? सेल मायनस परचेस. ओके, कंपनीमध्ये आपण काय करतो, जो पण कॉस्ट आहे, जो काही रेव्हेन्यू इन्कर झालेला आहे बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, जो रेव्हेन्यू इन्कर झालेला आहे त्याच्यातून कॉस्ट मायनस करतो, मिळतो काय आपल्याला? प्रॉफिट. आणि त्याच्यावर आपण काय करतो? टॅक्स भरतो. क्लिअर? सो सिमिलरली हियर कॅपिटल गेन काढण्यासाठी तुम्ही काय करता की सेल प्राइस मायनस परचेस प्राइस. ओके, सो दॅट becomes your capital gain. Okay, so if I had purchased a property, okay,
my house, okay, I purchased in 2004, okay, that SKF, in SKF colony, okay, in Chinchwad. So that property I purchased at 5 lakh that time, okay. Now if I will sell that property in 26 27, okay, so now value is 1 crore, clear. So if I'll sell that property, so what will be the capital gain? 1 crore minus 5 lakh, okay, 95 lakhs, very good, 95 lakhs. But is that logical? कारण तेव्हाचं जेव्हा तेव्हाची जी व्हॅल्यू होती पैशाची ती कमी होती, ओके. सो दॅट्स वाय. आणि नंतर काय झालं, इन्फ्लेशनमुळे रुपीजची व्हॅल्यू वाढत गेली, ओके ना. म्हणजे तेव्हा मला सॅलरी किती मिळायची टाटा मोटर्समधून? 35,000. आज मी टाटा मोटर्समध्ये असतो तर मला किती सॅलरी मिळाली असती? 3 लाख 5 लाख, राईट. कारण आता मला 35,000 दिलं त्यांनी सॅलरी, तर मी तर कामच नाही करू शकणार, जगू शकणार नाही, राईट. सो दॅट इज कॉल्ड इंडेक्स कॉस्ट. सो व्हॉट वी डू द इंडेक्सिंग ऑफ दॅट कॉस्ट, okay. So that time index, okay, so I'll show you index also. कुठे गेले इंडेक्स? This is the index, okay, this is called index, okay. So I purchased this property in year 2004, very good. That time index was 2004, okay, 113, 2004 to 5, right. So that time index was 113, and now I am selling that property. Let's say I am selling that property in 25 26. So what is the index? 376, correct. Now index cost कितना बनेगा उसका? Now I am selling that property for 1 crore, okay. 1 crore minus this is the sale price, this is the sale, okay. अभी index cost कितना बनेगा इसका? Is equal to 5 lakh into 376 divided by 113. कितना आता है? Correct, 12,21,000. You got this point? ठीक है, समझ गए आप? ओके. सो 1 करोड़ माइनस 12 लाख पॉइंट 21 कितना बचता है? अरे बोलो फटाक से, कितना बचेगा? 87 पॉइंट समथिंग. उसके लिए कैलकुलेटर की क्या जरूरत है यार, ठीक है. सो आई हैव टू पे कैपिटल गेन ऑन 87 पॉइंट समथिंग, ओके. सो कैपिटल गेन इज 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 20%. तो 20% निकालो 87 का कितना है, कितना बनेगा? Correct. And this I have to pay apart from my income from business or profession. This is independent thing. मुझे ये भरना ही है, उधर मेरा लॉस हो जाओ या कुछ भी हो जाए. Are you getting my point? Clear? अभी आप निकाल पाओगे. Also one thing is there, that is called cost of improvement. This is called a index cost of purchase. And there is also called a index cost of improvement. क्यों? क्योंकि 2004 में जैसा प्रॉपर्टी मैंने लिया था उसको तो मैं वैसे ही नहीं रखूंगा ना, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहूंगा क्योंकि मेरे को रहना है उसमें, ओके. एंड यू हैव टू डू द इंडेक्सिंग ऑफ दैट कॉस्ट ऑल्सो. कब आपने किया ये, ओके, दैट यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू डू द इंडेक्सिंग ऑल्सो. हेलो हेलो, हाँ बोल ना. हाँ
हेलो, आवाज नहीं थे, हेलो. हाँ. अरे आवाज नाही ते, मी शिकवते, तू त्या रामला काय आणायचं ते आणून देशील. ठीक आहे. ओके. तो याद रहेगा ये सारा चीज. ओके. नाउ रिमेंबर, ये जो एस्केप का घर मैंने खरीदा था, कितने में खरीदा था? 5 लाख में. ओके. इमीडिएटली, okay, after taking possession of that house, I have done a lot of things like उसमें interior decoration किया. Okay, and that cost was around 7 lakh. Okay, so you will find this index cost of improvement into index of the year of transfer divided by index of the year of improvement. कब किया मैंने? सेम ईयर 2004-05. कितने का था? 7 लाख. ओके, 7 लाख. अभी निकालो कितनी आएगी. 7 लाख इंटू कितना करोगे? 113 डिवाइडेड बाय, सॉरी 7 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाय 113. वेरी गुड, 23 lakhs. ओके. So for the sake of brevity, for easy calculations, I will add this. Okay, पहला कॉस्ट कितना था? 12.21. परचेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस वॉट एवर 16. हाँ, 16 प्लस 23 कितना हो गया? इसने फिर गलत निकाला क्या? 12 पॉइंट. अच्छा, ऐसा कैसे क्या गलत निकालता है? तो कैसा सीएमए बनेगा फिर? कितना आया? करेक्ट, 30. ओके, 40 पकड़ लेते हैं हम. तो 40, ओके, 40 चला गया और बचा हुआ जो 60 है उसके ऊपर मेरे को 20% कैप टैक्स पड़े. ओके, यानी 12 लाख गवर्नमेंट को देना है. क्लियर? कैपिटल गेन क्लियर हो गया आपको? ओके, चलो नेक्स्ट. अभी एक बात बताओ, दिस इंडेक्स, यू आर सीन दिस इंडेक्स. ओके, कब चालू हो गया ये इंडेक्स? सो इट इज स्टार्टेड इन 2001-02. नाउ व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी बॉट बिफोर 2000? उसका क्या? उसको कैसे निकालोगे? हाँ, 100 से लेना पड़ेगा? नो, क्योंकि तभी की परचेस प्राइस. अभी मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत सारे आती है, तो कुछ तो प्रॉपर्टी 1960 की रहती है, 65 की रहती है, बाप ने लिया हुआ रहता है आणि नातवानी विकलेली असते ती, आणि कॅपिटल गेन असतो त्याचं. कसं करायचं? I'll show you a lot of reports like this. Okay, because specifically we work in this domain, capital gain. तो उसको कैसा करोगे आप? Okay, so answer is you approach a chartered engineer. Okay, और उसको बोलो कि इसका तुम on in year 2001-02 वैल्यूएशन निकाल के दे. ओके, सो दे विल इशू यू सर्टिफिकेट कि ये वैल्यू है इसकी, एंड वो वैल्यू को आप इंडेक्स लगा के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल सकते हैं. क्लियर? ठीक है, समझ गए? ओके. और ऐसे केसेस बहुत आते हैं. ओके, नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर कैपिटल गेन. पहला ऑप्शन क्या है? पे टैक्स एट 12.5% विदाउट कंसिडरिंग इंडेक्स बेनिफिट. समझ गए? एंड अनदर ऑप्शन इज पे टैक्स एट 20% आफ्टर कंसिडरिंग इंडेक्स बेनिफिट.
अभी एस्केप के केस में गवर्नमेंट हैज गिवन मी 2 ऑप्शंस. एक तो क्या करो, 95% है ना, 95 लाख है ना तुम्हारा, है ना, कॉस्ट कितनी थी 5 लाख. ओके 1 करोड़ में तुम बेच रहे हो तो 95 लाख है, इस पे तुम 12.5% भर दो, कितना बनेगा 11,87,000. ओके और दूसरा ऑप्शन मेरे लिए है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले लो, इंडेक्स, फिर एक्विजिशन कॉस्ट का इंडेक्स ले लो, और आपने निकाला हुआ है ये. ओके 60 लाख आया था और 60 लाख पे आपने कितना भरा 20%, तो कितना बन गया 12 लाख. कौन सा ऑप्शन अच्छा है मेरे लिए, आई हैव टू फाइंड आउट एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू चूज द ऑप्शन. क्लियर, समझ गए? ओके चलो नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ. ते आधीच सांगितलेलं आपण जेव्हा इन्कम टॅक्स शिका, इन द मल्टिपल्स ऑफ 10 रुपीज. तेच आपल्याला. Then comes the transactions not regarded as a transfer. Transaction not regarded as a transfer. So section 46 and 47. Okay. So 46(1), any distribution of capital assets in the event of liquidation by company to its shareholder shall not be treated as a transfer in the hands of company. Okay. Liquidation case mein. You understand liquidation? What is liquidation? Okay, so liquidation is always by force. Okay, some government authority or authority, any authority. So it implies a force to sell those assets. Okay, so in such a cases, that transactions will not be regarded as a transfer. Why? I'll let you know. See, it happens in case of insolvency. तो insolvency में साला उसको खाने के लिए पैसा नहीं तो तुम टैक्स कहाँ से लोगे? ठीक है, liquidation happens in case of insolvency. Okay, so any distribution of capital assets in the event of liquidation by company to its shareholder shall not be treated as a transfer in the hands of company. Then any distribution of capital assets on the total or partial partition of HUF. Okay, capital assets on the total or partial partition of the HUF. Then any transfer of capital asset by an individual or HUF under a gift or will or an irrevocable trust. Okay, so only here exception is there, that is a gift of shares acquired by employee stock option ESOP shall be treated as transfer. Okay, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ये एस्केप का मेरा जो घर है जिस पे आपने कैपिटल गेन निकाला आप भी. अरे क्या लोग हैं यार. हेलो, हां सर नमस्कार. नमस्कार. मी शिकवतोय एक लेक्चरमध्ये, थोड्या वेळाने कॉल केला चालेल का? मी हो चालेल ना. मी 9ला कॉल करतो तुम्हाला. ठीक आहे चालेल. हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, एस्केप का जो घर है मैंने मेरे सिस्टर को दे दिया, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, बट दैट विल नो कैपिटल गेन विल अराइज. क्यों? बिकॉज that will come under 47(3). Okay, so any transfer of capital asset by an individual, Ashish Deshmukh is an individual, okay, under a gift or will or an irrevocable trust, ये सारा it is not considered as a transfer. Though it is transfer, it is not considered as a transfer. Are you getting my point? 47(3) को ऐसा याद रखना है आपको. ठीक है, तो मैंने मेरे सिस्टर को दे दिया ये अंडर ए गिफ्ट, so it is not capital gain. Okay, I can gift her shares also.
ओके, ओनली एक्सेप्ट ESOP. अगर कोई कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, आई गॉट द ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में से. ओके, जैसा आई वॉज वर्किंग विद मैरिको इंडस्ट्रीज, ओके, इन स्टार्ट, सो दैट टाइम आई गॉट द ESOP. शेयर्स मिल गए मैरिको इंडस्ट्रीज के 300 शेयर्स. ओके, सो दैट आई कांट गिफ्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड. ESOP क्या है? आपको कम प्राइस में दिया गया हुआ है. ओके, तो उस पे तो कैपिटल गेन आना ही है आपको, क्योंकि जब मिले तभी तो कैपिटल गेन हुआ नहीं आपको, लेकिन आप बेच रहे हो. ओके, सो यू आर फेवर्ड. सो ऑलरेडी फेवर्ड मिल गया है, तो इसलिए आपको इधर एक्सक्लूड कर दिया. समझ रहे हो? ओके, ये आप सब पढ़ लेना है आपको ये सर. (47) is what is not the transfer, what is not what is excluded as a transfer. So that is given as 47. Okay, chalo, next is 49, deemed or notional cost of acquisition. Notional cost of acquisition. You understand cost of acquisition? समझ में आ रहा है ना? Cost of acquisition, that is a purchase. Acquisition means how you acquire the assets. Okay, cost of acquisition. Okay, so what is a deemed or notional cost of acquisition? So in certain cases which are stated below, like assets received on total or partial partition of HUF. Okay, so in certain cases cost of acquisitions of previous owner of the property shall be deemed to be the cost of acquisition for the assessee. Okay, so assets received under a gift or will, जैसा मेरे सिस्टर को मैंने दे दिया, ट्रांसफर कर दिया एसकेएफ वाला घर, एसकेएफ कॉलोनी वाला घर, और मिलने के बाद उसने अगर वो बेचा, ठीक है, तो आज वो उसका वैल्यूएशन है 1 करोड़, हो सकता है 1.5 करोड़ में उसने बेच दिया आगे चल के, तो उसको कैपिटल गेन आएगा क्या? श्योर आएगा, आएगा ही आएगा. सो दैट टाइम हमको पता नहीं ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था. ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, वो कैसा मिलेगा उसको? ओके, सो दैट्स व्हाई डीम्ड, इट इज कॉल्ड अ डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कैसा निकालना है ये भी बताता हूं मैं आपको. सो एसेट्स रिसीव्ड बाय सक्सेशन. सक्सेशन यू अंडरस्टैंड? जैसा बाप है, ओके, बाप के बाद उसका जो प्रॉपर्टी है, एज अ लीगल हेयर इट गोज टू हिज सन्स और डॉटर्स. ओके, और दैट विडो वाइफ है ना, स्पाउस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ लीगल सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. लीगल सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, इनहेरिटेंस, वारसा हक्क, इनहेरिटेंस. ओके, और डिवोल्यूशन, और डिवोल्यूशन. डिवोल्यूशन का मीनिंग भूल गया यार मैं. 1 मिनट, आई जस्ट फाइंड आउट डिवोल्यूशन. मानस, okay, the act of giving political power from central to local government, that is the devolution. Okay, but here हाँ बोले तो सत्तेचं हस्तांतरण. ओके, power is shifted from one person to another person, so that is a devolution. Okay, assets received on dissolutions of a firm, BOI, AOP, assets received on liquidation of company, asset received under a trust. Okay, so that is there you have to find the notional cost of acquisition.
Okay. Then notional sale consideration. So in some cases, notional sale value is considered rather than the actual sale value. Though actual sales value is available, still you have to consider notional sale value. कैसे cases है insurance claim received on damage or destruction of capital assets. That is also a transfer. That is also called a transfer. Okay. कई plant and machinery. Okay. उधर फायर हो गया कंपनी में और फायर में पूरा प्लांट एंड मशीनरी जल गया. ओके. सो स्टिल देयर विल बी ए क्या रहेगा उस पर कैपिटल गेन. ओके. जलने के बाद सो नॉर्मली यू नो दैट इट इज ऑलवेज इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड फायर पॉलिसी. सो फायर पॉलिसी लेके रखता है कंपनी. ओके. तो फायर पॉलिसी का इंश्योरेंस क्लेम. ओके. तो कितना क्लेम मिला है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नोशनल सेल. ओके. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नोशनल सेल. ओके. सो कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड इन कैश और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड एज अ कॉम्पेंसेशन. फेयर मार्केट वैल्यू. ओके. फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एसेट received as compensation. So normally this fire policy that goes on basis of reinstatement of the asset. Reinstatement of the assets. You understand reinstatement of asset? जैसा कार का इंश्योरेंस पॉलिसी अगर है. ओके. और आपके कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पॉलिसी का कितना पैसा मिलेगा. कितना मिलेगा. समझो तुम्हारे पास कार है 5 लाख का कार है. ओके. तुमने इंश्योरेंस लेके रखा है उसका. राइट. जब भी वो कार का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है पूरा एक्सीडेंट हो जाता है कुछ बचेगा ही नहीं तो ऐसे टाइम आपको कितना इंश्योरेंस मिले. और वो कार की आज की वैल्यू है 12 लाख. अगर वही कार मैं खरीदने जाऊँ तो दैट इज अवेलेबल एट 12 लाख. कितना इंश्योर्ड है कैसा फाइंड आउट करोगे. नहीं. नेवर. सो वी डू द वैल्यूएशन ऑफ दैट कार. करेक्ट. सो वैल्यूएशन निकाल देना हम क्या करते हैं कि कितना साल का उसका डिप्रिशिएशन लेना है. ओके. और वो कार की आज की कीमत क्या है. वी कॉल इट एज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट. जैसा आज मेरा कार है. ओके. सो आई बॉट दैट कार इन 2023. I purchased that car in 2023. Okay. And I found that मैंने जब कार लिया था तभी था 21 लाख. ओके. तभी 2023 में. ओके. आज उसका वैल्यू सो आई हैव टू रिड्यूस द डिप्रिशिएशन. तो डिप्रिशिएशन अगर मैं पकड़ता हूँ 10% चलो. ओके. तो 2 लाख कम हो गया पहले साल में 2 लाख दूसरे साल में अभी तीसरा साल चल रहा है और 2 लाख कम करता हूँ तो आज वैल्यू कितना होगा उसका 15 लाख. 21 माइनस 6. सो ये 15 लाख जो वैल्यू है. ओके. सो शुड आई गेट अ 15 लाख वैल्यू और 21 लाख वैल्यू. रीइंस्टेटमेंट का मतलब है कि दे हैव टू रिप्लेस द सिमिलर एसेट सेम एसेट. आज के डेट में वो जो जैसा था वैसा. दैट इज कॉल्ड अ रीइंस्टेटमेंट. वैसे कि वैसे आपको देना है उसको. ओके. तो माई कार वॉज डिप्रिशिएटेड बाय 3 years तो वैल्यू कितना था 15 लाख. सो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इज दे हैव टू पे मी 15 lakhs. करेक्ट. दैट इज कॉल्ड अ रीइंस्टेटमेंट. क्लियर. सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और ऑन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट. तो इसमें हम डीम वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड इन कैश और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड एज अ कॉम्पेंसेशन. ओके. देन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक. सो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन डेट ऑफ सच अ कन्वर्जन. क्लियर. Then transfer of capital assets by a partner member to a firm AOP BOI as capital. The amount recorded in books of accounts of the firm AOP BOI as a value of such assets.
Okay. Assets received by shareholders on liquidation, money so received or the market value of other assets on the date of distribution. ये सारा आपको पढ़ लेना है. Okay, that is called a notional cost of acquisition. Now I'll come to the same topic, that is the computation of capital gain in certain cases, right? So capital gain in case of insurance claim. So as per Supreme Court in CIT versus Vania Silk Mills Private Limited, any compensation received as an insurance claim for the loss of capital assets shall not be taxable. Just because of this case, okay, it is not taxable. ठीक है. However, with effect from assessment year 2001, okay, section 45(1)(a) has been inserted, which nullify the impact of above case law to some extent. Okay, पहले ही मैंने बताया आपको कि अगर जल जाती है तो आपको क्या देना है, कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा. Okay, so similar thing is our book is also telling. Okay, so as per the provision of this section, any compensation received from insurance company for the specified damages is treated as transfer. Such a transfers are liable to capital gain in the year of receipt of compensation. जो भी आपको मिल रहा है insurance claim, so that will be treated as a sales receipts, है ना? Okay. So it will be treated as transfer. So insurance claim received, that is treated as transfer, thus liable for capital gain. Okay. अगर इंश्योरेंस किया ही नहीं होगा, no claim is received. Okay, no claim, no capital gain. In that case, no capital gain. Okay, and cause of damage other. Okay, so then there will be no transfer. So specified damages means all this. Okay. Flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake or other natural calamities, then riot or civil disturbance, accidental fire or explosion, then action by any enemy or an action taken by combating an enemy. Okay, so that is specified thing. ये सारे प्रॉब्लम आपको करना है. Then there is the next case is capital gain on ULIP. What is ULIP? Unit linked. Okay, so unit linked insurance policy, ULIP. So any person receives at any time during any previous year any amount under a unit linked insurance policy to which exemption under section 10(10)(d) does not apply, including the amount allocated by way of a bonus on such a policy. So treatment is any policy or gains arising from receipt of such amount by such a person shall be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of such a person of the previous year in which such amount was received, and the income taxable shall be calculated in such a manner as may be prescribed. Okay, so where ULIP is considered as a equity oriented unit, income from such a policy shall be taxable under section 2. It is taxable, ULIP also. Okay, तो इसमें हर केस का उन्होंने दिया है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसा निकालना है या ट्रांसफर प्राइस कैसा आपको डिसाइड करने का है. ओके, Okay, then capital gain on transfer by way of a compulsory
एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन, ये मैंने एकदम स्टार्ट में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया ना आज, तो तभी मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, कंपलसरी एक्विजिशन. सो यू अंडरस्टूड दैट कंपलसरी एक्विजिशन. I had given a example of bank also. NPA अगर होता है and bank takes the possessions, so that time it is a case of compulsory acquisition. Okay, so when a transfer of capital asset, so that comes under section 45(5). Okay, so it says that when a transfer of a capital asset other than the urban agro land, urban agro land, other than the urban agro land means rural agriculture land, rural agriculture land, rural agro land. Okay, so when the transfer of capital asset other than urban agro land, okay, is by way of a compulsory acquisition under any law, or when a capital asset is transferred and the consideration of transfer is to be determined as approved by the central government, not by the state government or the Reserve Bank of India. They specifically use this word because in case of bank insolvency this happens. Okay, compulsory acquisition happens under SARFAESI Act. Okay, so banks are controlled, nationalized banks or any bank, cooperative bank, koi bhi रहने दो, they are controlled by RBI, Reserve Bank of India, and that's why this word was inserted. Okay. So tax treatment of initial compensation received. Okay, so cost of acquisition or cost of improvement as usual करना है आपको. Expenditure on transfer, legal expenditure incurred to recover claim shall be allowed as deduction. Okay, taxable year कौन सा है? The year in which such a compensation or a part thereof is first received. Indexation benefits available till the year of compulsory acquisition. Okay, available while computing tax where the resident individual or resident HUF opt to pay the tax. I hope you will do all these problems, illustrations, सब cover कर लेने का आपको. Okay, exam point of view. Then there are exemptions also in case of certain compulsory acquisitions. Okay, conditions are assessee has transferred urban agriculture land being a capital asset. Then such a land was used for agriculture purposes by such HUF or individual or his parents during the period of 2 years immediately preceding the date of transfer. Such a land is transferred by way of compulsory acquisition under any law for a consideration to be determined or approved by the central government. Okay, the compensation or consideration for such a transfer is received by such assessee on or before 1/4/2004. Okay, and that's why banks never takes agriculture land as a collateral. कोलैटरल में तुम बोलो ना मेरे पास इतना ज़मीन है, वो बोला कोई काम का नहीं हमको, एग्रीकल्चर लैंड है, नो. ओके, बट इफ विल से कि प्लॉट है, हाँ इमीडिएटली कम, विल गिव प्रोवाइड यू लोन. ओके, व्हाई? बिकॉज दे इंश्योर्ड देयर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने से उनको कैसे रोका जाएगा? बिकॉज एनपीए अगर बनता है तो हैविंग दैट एग्रीकल्चर लैंड एज अ कोलैटरल इज ऑफ नो वैल्यू, इज ऑफ नो वैल्यू टू देम. क्लियर? ओके. नॉर्मली टैक्सेशन में ना ये देखा जाता है कि देयर शुड नॉट बी अ डबल टैक्सेशन. जैसा पार्टनरशिप को मैं टैक्स कर रहा हूँ, ओके, सो वंस आई पे द टैक्स एंड आई डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स इन द डिसाइडेड रेशियो, सो इट
becomes a tax free in the hands of partner. Why? Because already that partnership firm has paid the tax. Clear? Only here in case of liquidation, okay, it doesn't happen. So there is a double taxation. Why? I'll tell you. So company under liquidation, so they sold capital asset in the market, so they that company is required to pay tax on capital gain. Okay, then if there is a profit, so that cash get distributed to shareholders, because shareholders are ultimately the partners. Okay, they are the company owners, so ultimately it goes to owners. Okay, and then again shareholder will have to pay the tax on capital gain on transfer of shares. Why? Because it happened in lieu of their shareholding. Okay, and you know that unlisted shares will be treated as a transfer. Okay, so they have to pay again the capital gain. So it is the case of double taxation, but it is allowed in case of liquidation. करेक्ट? समझ गए ना तुम? जैसा डिविडेंड, ओके, सो डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किसको टैक्स पे करना है? कंपनी को, whenever they distribute, and but that dividend amount that becomes a tax free in the hands of, correct, only here in under the case of liquidation you have to pay the double tax. One company will pay and another that shareholder. Okay, why? Because it's a case of exchange. जैसा मैंने इसको मोबाइल दिया और उसने मेरे को मोबाइल दिया, लेकिन दोनों को टैक्स आया, आया, कैपिटल गेन मुझे भी पे करना है और इसको भी पे करने का है, तो दिस इज द केस ऑफ दैट एक्सचेंज. ओके, उसको पैसा क्यों मिला? इन ल्यू ऑफ हिज शेयर होल्डिंग, इन ल्यू ऑफ हिज शेयर होल्डिंग, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डबल टैक्सेशन. क्लियर? ओके. एक काम कर सकते हो, ऐसे केस में हम क्या करते हैं जनरली, वी डिस्ट्रीब्यूट दिस कैपिटल एसेट्स. जब भी लिक्विडेशन में आते हैं ना, हम क्या करते हैं कि हम उनको आइडिया देते हैं कि ऐसा कुछ मत करो, सेल मत करो. यू डिस्ट्रीब्यूट दिस कैपिटल एसेट्स टू शेयर होल्डर्स. एक कंपनी थी, मेरे पास आए थे वो, ओके, तो उनके पास ना उन्होंने एक, यू आर नॉट इंजीनियर सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, वी कॉल इट एज ए 3D प्रिंटिंग. ओके, तो 3D प्रिंटिंग क्या करती है कि जैसा मैंने डिज़ाइन दे दिया ना, तो वो हिसाब से कंप्यूटराइज, ओके, वो हिसाब से कटिंग करती है, स्टील वगैरह कट करेंगे. ओके, सो तुमने अगर डिज़ाइन दिया कि आपको ये आदमी बना के दे दो, तो बराबर वो मशीन्स बिकॉज ऑफ दैट प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल दे दिया आपने 3D इमेज, सो 3D बराबर वो ऑब्जेक्ट पूरा बना के दे देंगे आपको, आदमी को. ओके, सो इट इज़ नॉर्मली वी यूज़ फॉर रोबोटिक्स. रोबो बनाना है अगर, तो रोबोटिक्स में हम यूज़ करते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन. सो दैट दे हैड दैट 3D प्रिंटिंग मशीन. ओके, देन दे हैड मीन्स 3D प्रिंटर था उनके पास वगैरह, और कुछ एसेट्स थे, टूल्स थे. सो आई गिव देम आइडिया कि यू डिस्ट्रीब्यूट दिस टूल्स. आपको, आप इंजीनियर लोग हैं तो आप उसका वैल्यूएशन निकाल दो और डिस्ट्रीब्यूट कर लो ये, ठीक है. उसमें फायदा क्या होता है कि वंस यू डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज अनदर केस, नीचे वाला केस, डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल एसेट टू शेयर होल्डर्स. सिंपल. वो क्या करेंगे? कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स. ओके, देन शेयर होल्डर्स विल पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. कितने बार कैपिटल गेन हुआ? ऊपर वाले केस में 2 बार. कंपनी को पे करना पड़ा, उसको भी पे करना पड़ा. ओके, केस ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे एक ही बार होता है. क्लियर? ओके, तो मार्केट में सेल करने से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट. करेक्ट, समझ गए? यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन में एक ही बार टैक्स पे करना है. हाँ हाँ, करेक्ट, लेकिन वो एसेट उसका हो गया ना, तभी उसको रखना है, वो 2-3 साल यूज करना है, कोई नया एंटिटी बना के यूज कर लेने का उसको. समझ गए? ओके.
कंपनी का टैक्स तो बच गया ना, लेकिन कैपिटल गेन बच गया. ओके. Okay, you understand buyback share. ये normally happens in case of equity also. Companies they buy back their shares. क्यों करते हैं? हाँ, वो जो प्रोमोटर रहते हैं ना, जो ओनर्स है कंपनी के, तो ये खुद का जो चंक शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए नॉर्मली दे गो फॉर अ बायबैक. ओके. वन कंपनी इज फेमस फॉर बायबैक, दैट इज अ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ओके. ऐसी सिचुएशंस आती है ना जब भी शेयर्स गिरते हैं. ओके. सो उनके बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, सबको फ़ोन जाता है, खरीदो खरीदो खरीदो, बस उतना ही फ़ोन पे बात करते हो, खरीद लो खरीद लो. ओके. क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है प्रॉस्पेक्ट्स क्या है आगे चल के. ओके. एंड इफ दे हैव अ मोर शेयर होल्डिंग्स, दे विल हैव मोर प्रॉफिट. Okay. So shareholdings that decides the controlling of the entity. जैसा you must be knowing Tata Sons. टाटा सन्स नाम सुना है? कहीं देखते हैं कि आप टाटा सन्स के ये फैक्ट्री है वो फैक्ट्री, कुछ नहीं है. ओके. बट दे हैव अ मैक्सिमम स्टेक इन टाटा एंटिटीज एंड दैट्स व्हाई दे आर रूलिंग. इसलिए वो रूल करते हैं. वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस साल रतन टाटा नहीं बनेगा, मिस्त्री बनेगा. हु डिसाइड्स? टाटा सन्स डिसाइड्स. और टाटा सन्स में सबसे बड़ा स्टेक किसका है? हु स्टेक इज देयर? टाटा सन्स. अरे बताओ कैसे यार? शापूरजी पालोनजी. हैव यू हर्ड दिस नेम? शापूरजी पालोनजी? नहीं. दिस वॉज द पर्सन. ओके. अभी उसके साथ बहुत सारे SCZ, शापूरजी पालोनजी, SCZ हमारे इधर है. ये हड़पसर में जाओगे ना, तुम हड़पसर क्रॉस करोगे आगे जाओगे, ओके, यू विल फाइंड अ बिग SCZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ शापूरजी पालोनजी. ओके. ही वॉज द पारशी गाय. ओके. एंड अभी वो मिस्त्री जो एक्सीडेंट में चले गए ना, ही वॉज हिज सन. शापूरजी पालोनजी का लड़का था वो. ओके. तो ये डिसाइड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ शेयर होल्डिंग्स ही पजेस. शेयर होल्डिंग ही पजेस. ओके. जैसा थर्मैक्स. थर्मैक्स इज ओन बाय होम? ओन बाय थर्मैक्स. कौन मालिक है? तुमको फटके पड़ने वाले हैं, बहुत मारूंगा एक आध दिन पकड़ के. कुछ भी नहीं पता रहते आपको कंपनियों के बारे में. साला आपसे अच्छे तो इंजीनियर है. फिर ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता रहनी चाहिए, लेकिन पता रहती है. और आपको पता रहनी चाहिए तो पता नहीं रहती. आगा नाम सुना है? ओके. सो उन्होंने ये कंपनी बनाई थी. ओके. तो दैट आगा फैमिली दे आर द ओनर्स ऑफ दिस कंपनी. शेयर होल्डिंग्स है अभी. ओके. तो हिज डॉटर, हर नेम इज अनु आगा. हैव यू हर्ड दिस नेम अनु आगा? कि ये भी नहीं सुना है? अनु आगा भी नहीं सुना है? ओके. ओके. सो ही हैड 2 daughters. ओके. एक मेहर करके है एंड दूसरे सेकंड इज अनु आगा. ओके. नाउ दे कंट्रोल्स दिस कंपनी. आपको सब पता चाहिए, यानी जितने भी 100 कंपनीज है लिस्टेड, बहुत बड़े कंपनीज. सो फर्स्ट 100 कंपनीज यू कैन फाइंड आउट देयर हिस्ट्री ऑल्सो. ओके. डू इट. और ये एक तुम्हारा हैबिट बना दो. रील बिल देखने से अच्छा इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो. क्या? क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसकी बहुत सारी जानकारी आपको हो जाएगी. दैट्स वाई यू डू इट. ओके. ये आपके फायदे की बात है इसलिए.
So buyback of specified securities other than shares is a transfer for its holder and shall be treated as under sale consideration. It is deemed to be nil. Cost of acquisition, cost of improvement as usual, taxable in the year in which securities are purchased by the company. ये zero coupon based, I use this word many times today. Okay, लेकिन किसी ने मेरे को पूछा नहीं कि क्या है सर ये, what is this zero coupon bond? Anyone from online, can you tell me what is a zero coupon bond? No? इनका अलग प्रॉब्लम है, उनको अपना आवाज जाता है कि नहीं ये भी अपने को पता नहीं. Am I audible? चले गए लगता, भाग गए. हेलो. Okay, so zero coupon bond means a bond issued by any infrastructure capital company or infrastructure capital fund or infrastructure debt fund or public sector company or schedule banks. Okay, name some few infrastructure capital company. कौन से infrastructure capital company इंडिया में? हाँ, गोदरेज, वेरी गुड. और इफकॉन, हैव यू हर्ड दिस नेम? इफकॉन. L&T, yes, very good. L&T, infrastructure company. So whenever these companies, जैसा इन्होंने नाम लिया ना, L&T, इफकॉन और गोदरेज, so they in market they issues their infrastructure bond, capital fund, for raising capital fund, infrastructure capital fund, they issues the bond and people buys it. Okay, and we call it as a zero coupon bond. So in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity or redemption from the issuer. तो ये बॉन्ड का ना एक पीरियड होता है 10 साल, 5 साल, 7 साल. ओके, यू कांट रिडीम इट. ठीक है, बीच में अगर पैसा लगा तो भूल जाओ. क्यों? ओनली आफ्टर दैट पीरियड, जो टेन्योर दिया है ना उन्होंने, ओके, तभी इसका पैसा आपको मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज अ फिक्स टेन्योर बॉन्ड्स. बीच में आप तोड़ नहीं सकते. एफडी तोड़ सकते हैं. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड दिस बॉन्ड्स. क्लियर? एफडी तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं. उसमें क्या करता है वो 1% कम कर देता है. So if it is 5.5% interest, so he makes it 1% less, 4.5%. Okay, ये इसमें नहीं जा सकते तुम. Addition, yes, but it should be a open scheme. There are two schemes under this zero coupon bond में. एक को हम बोलते हैं ओपन स्कीम, एक को बोलते हैं क्लोज स्कीम. क्लोज में जितने दिनों का उन्होंने दिया होगा पीरियड, तभी तुमको परचेस करना है और भूल जाना है, कभी खुलेगी नहीं फिर आगे चल के. ओके, एंड ओपन स्कीम रिमेन्स ओपन. ओके, तो उसमें कैसा रहता है? ओपन स्कीम में 1 साल के बाद भी तू डालेगा. ओके, और मैंने इनिशियल पीरियड में डाला है, तो मेरा समझो 2020 में हमने खरीदे है ना, कोरोना ईयर में. ओके, मैंने 2020 में खरीदा तो मेरे को 2017 में पैसा, 7 साल का है अगर, तो 2017 में पैसा मिल जाएगा. तूने 2021 में डाला है तो तेरे को मिलेगा 2028 में. दिस इज द ओपन स्कीम. ओके, क्लोज स्कीम कैसी रहती है? 2020 में ही आएगी फॉर लेट्स से पीरियड ऑफ 3 months. इट विल रिमेन ओपन, उसके बाद क्लोज. क्लियर? ओके. Of course, this zero coupon bond shall be treated as a long-term capital asset, क्योंकि ये more than 3 years रहते ही रहते हैं. Okay. If it is held by the transferor for more than 12 months. Okay. So redemption, just like a mature अपना mutual fund, redemption or maturity or sale of such a bond shall be treated as a transfer. Then ESOP.
हिसाब पढ़ लेना घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हिसाब में। कितना बड़ा है ये चैप्टर, खत्म ही नहीं होता क्या? ये सारा चीज़ है ना, इट इज़ स्टिल देयर। डिफ़ॉल्ट रिजिम में भी ये वैसे ही रह गई है। फर्क किधर है? वो पहला जो चैप्टर था ना, सैलरी वाला, उसमें फ़र्क हो गया है। ओके, बाकी ये वैसे सेम। पार्डन मी, मोठ्याने बोल, मला ना याच्यामुळे अजानमुळे आवाजच नाही येते तुझे। पीजी, पीजी का है? हाँ, उसमें भी उसमें क्या फ़र्क है? उसमें उसमें नहीं है कुछ, वो डिफ़ॉल्ट। हां, मग तसा फरक सगळ्यात पडला आहे। म्हणजे कॅपिटल गेनमध्ये पण काय फरक पडला माहिती आहे का? इंडेक्स काढून टाकला आहे, इंडेक्स काढून टाकलेला आहे त्याने। ओके, ओनली डायरेक्ट वो 12.5% वाला है। ओके, इंडेक्स निकल गया। So there were two options under old regime, either एक ही ऑप्शन। आणि इंडेक्स काढल्यामुळे आमचे वांदे झाले, कारण आमचा धंदा बुडाला सगळा। कारण आमचा धंदा काय होता तर त्याचं ॲक्च्युअल व्हॅल्युएशन काढून देणं, तेच। पहले सारे सीए हमको फ़ोन पे, सर ये करके दो, सर हमारा प्रायोरिटी पे दे दो, ऐसा। ओके, अभी वो धंधा ही बंद, सीए के फ़ोन आने बंद हो गए। और एक टाइम तो ऐसा था कि हम इसमें मास्टर हो गए थे, कैपिटल गेन के खुद ही हम, यानी सीए से करने से अच्छा लोग हमको ही आके मिलते थे कि आप ही करके दे दो पूरा। So next chapter, that is income from other sources. So that I will start in next lecture. So that will be on आज कितना 23 ना 22 29, ठीक है? तो 29 को ये चैप्टर हम चालू कर देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, ये चैप्टर होप सो छोटा होगा। सो वी आर ऑन द पेज 361। ओके, और किताब का पेज है 353। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। कितना बड़ा है यार ये बुक, 600 पेजेस। अभी हम पहुँचे कितना, मोर देन 50%, थोड़ा सा मोर देन 50%। चलो, थैंक्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग। ये स्टॉप कर दूँ क्या? हाँ, आ जाए जरा इधर। हाँ।